Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 25th of September. The session will be quite beneficial for you all, so stay tuned with us till then. Students, in this video we will be discussing important current affairs where we will be talking about the second edition of Shrinkhala HUM Talk series. Then we will be talking about 7 new incubation centers of Wavex. Next thing, we will be talking about the 7th anniversary of Ayushman Bharat and an MOU that has been signed to establish 2 DBNet stations under Mission Mausam. All these things and many more will be discussed. So stay tuned with us till then. If you are new here, do subscribe to us and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, let's start with national affairs first. First is 28th National Conference on E-Governance that was held in Visakhapatnam. What is the location? Where was this National Conference on E-Governance held? It was held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Which edition of it was? It was the 28th edition of this National Conference on E-Governance. What was the theme of this on which this was held? It was held on Viksit Bharat, Civil Services and Digital Transformation. Right, this was a 2-day long conference that was co-hosted by DARPG, right, along with MEITY and Ministry or Andhra Pradesh government, right. So they organized or they co-hosted this together. During this conference only, Union Minister Dr. Jitendra Singh conferred the National Awards for E-Governance for 2025 to 19 exemplary initiatives that comprises 10 gold, 6 silver and 3 jury awards across 6 domain categories. Correct? Take a note of this. Then here IIM Visakhapatnam was the knowledge partner here for this 28th edition of for the National Conference on E-Governance. Right. Apart from this, if we talk about this here, each winners that we were talking about these awards here, each winner was awarded with a financial support of 10 lakh rupees for gold, the one who won the gold, and 5 lakh rupees to the person or individual who won the silver. Correct? Take a note of this. Then apart from this, if we talk about the Gram Panchayats here, the winning Gram Panchayats, gold award was to Rohini Gram Panchayat, right? And silver award to West Majispur Gram Panchayat, that is in Tripura. There's Rohini Gram Panchayat in Maharashtra. Then jury award to Palsana Gram Panchayat in the Surat district of Gujarat. Right? Take a note of this, students. Apart from this, students, if I ask you, tell me recently, Myntra, we all know about Myntra, right? They have partnered with Saurav Ganguly, Dada, right? The former Indian captain, Indian cricket team's captain and former player, right? So Myntra partnered with Saurav Ganguly to launch a premium ethnic wear brand that is Sauragya. Sauragya is the name of the premium ethnic wear brand. Correct? Next is Union Minister Prahlad Joshi, as you can see him in the picture. Right? Sorry, Union Minister Prahlad Joshi and Maharashtra's Chief Minister, as you can see him in the picture, Devendra Fadnavis ji, inaugurated AIIFA Stelex 2025 in Mumbai, Maharashtra. What is this event about? What are we talking about this? What is this AIFF Stelex? Right? So, if we talk about this Stelex, it is your Steel Mahakumbh, right? Here the focus is on building the green cities, sustainable cities, right? So this was inaugurated where? This question can also be asked. This was inaugurated, right? And by whom? By Devendra Fadnavis ji and Prahlad Joshi. And what was inauguration of AIFF Stelex and 37th National Conference on Sustainable Steel. If we talk about steel, students, remember green steel is also coming into play that will be promoting, and even the government is incentivizing the manufacturers and the buyers that they should purchase this green steel, right? So coming back, what was the theme here? A Steel Mahakumbh, one industry, one destination. Where was this inaugurated? In Mumbai, Maharashtra, supported by the
UNDP also, United Nations Development Program, and as I mentioned, the theme is important here, so take a note of this. If we talk about some of the highlights here, green certificate, right? That is, during this, green certificate was inaugurated. That is a formal recognition for steel manufacturers who will excel in sustainable practices at promoting the green steel. Right? Apart from this, Government of Maharashtra, they have signed MOUs worth 80,962 crore rupees for industrial projects. Manufacturing will be focused here, right? And if we talk about this AIIFA, what is this AIIFA? This is your All India Induction Furnaces Association, right? Hence AIIFA SteelX 2025 or Steel Mahakumbh, right? And as well as the 37th edition of the National Conference on Sustainable Steel was held at the Bombay Exhibition Center in Mumbai, Maharashtra. Right, students? If we talk about Maharashtra, who is the Chief Minister of Maharashtra? Devendra Fadnavis ji. Who is the Governor? Acharya Devvrat. Capital is Mumbai here. Right? Next, remember, if I ask you recently, Hindustan AF or HCL, they have partnered with Oil India Limited and they have signed a memorandum of understanding here to focus and develop the critical minerals and strategic minerals. Then tell me, which is India's official entry for Oscar 2026 in the Best International Feature category? Best International Feature category. Which is it? Name that movie. It is your Neeraj Gyan's Homebound. Homebound. Next is MSGE, that is your Ministry of Sports, Ministry of Social Justice and Empowerment. They have launched Vidya Mitra Toolkit and second edition of Shrankhala HUM Talk Series. Right? Let's go one by one. First of all, this Vidya Mitra Toolkit. What is this Vidya Mitra Toolkit? This is a schoolship program of school. What is this school? School is your Society of Community Health Oriented Operational Links. This is a registered non-for-profit organization that aims to attain Sustainable Development Goal 3. What is the Sustainable Development Goal 3? That focuses on the health. Right? That is good health and well-being. So Vidya Mitra Toolkit will be focusing on school. That is talking about Sustainable Development Goal 3. That is health and well-being. Correct. So this Vidya Mitra Toolkit, it was designed as a comprehensive and user-friendly resource that will be strengthening the community-based elder care. Vidya here stands for elder people. Right, students? So take a note of this. Second thing we are talking about is the second edition of Shrankhala HUM Talk Series. I repeat, second is your second edition of Shrankhala HUM Talk Series. Right? This was launched in 2024. And the theme with which this Shrinkla Talk Series was launched is Aging with Dignity. Aging with Dignity. Right? And this will provide a series, or it will provide a platform for the policymakers, citizens and thought leaders to discuss elderly issues, right? So that they can be taken into consideration. And here remember the theme for this second edition was HUM, that is Hum Anubhav or Utsav Ka Sangam. Correct? So two initiatives, Vidya Mitra Toolkit and second edition of Shrinkla HUM Talk Series, where discussions will be held, right, on how we can enhance the elderly care. Apart from this, students, Border Road Organization, their project Vijayak, right, it marks the 15th Raising Day in Kargil. Right? Then which edition of the National Governance on E-Governance kicked off in Visakhapatnam? We just discussed this in starting of this video. It was the 28th edition. Moving on, students. Next is MIB, that is your Ministry of Information and Broadcasting. They have announced the launch of 7 new incubation center of WAVEX. What is WAVEX? World Audio Visual and Entertainment Summit. So Ministry of Information and Broadcasting, they have announced the expansion of their startup accelerator WAVEX with the launch of 7 new incubation center. These centers, they will be supporting the startups that are associated with animation, visual effects, gaming, comics, extended reality and many more. Right, students? So 15 selected centers or 7 new. First of all, remember that 7 new incubation centers will be coming here and 15 startups, or we can say 15 teams will be selected per center in the batch where they will be further
talked about, where there will be help to grow, right? So it is MIB, Ministry of Information and Broadcasting. They have announced the expansion of the Wave X, right? Then apart from this, 5th edition of the World Teak Conference 2025. Where was this held? It was held in Kochi, Kerala. It was held in Kochi, Kerala. Then what is the rank of our India in Global Innovation Index? Global Innovation Index. What is the rank of India? India stands at 38th position, right? Then Donald Trump, or we can say USA, they have imposed how much amount of fees on H1B visa. So the fees here was 1 lakh US dollar, and this will be given by the companies that will be hiring the foreign talents, and this will be a one-time fee, and all the registration that will be held after 21st of September, there on them this 1 lakh dollar fees will be imposed. Next is India witnessing revolution in public healthcare and 7th anniversary of Ayushman Bharat. What is this Ayushman Bharat, students? First of all, let's talk about this, right? This Ayushman Bharat, right? This scheme was previously known as the National Health Protection Scheme, and then later on it was renamed to Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, right? And this Ayushman Bharat scheme, this scheme basically that Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, this is a very crucial scheme that forms the part of this Ayushman Bharat scheme, right? Now, talking about this Ayushman Bharat, this is the world's largest health assurance scheme under which Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana comes into play, right? Because we all know about this scheme. So recently it was the 7th edition of Ayushman Bharat that was recently observed. Ayushman Bharat was launched in 2018, launched by Ministry of Health and Family Welfare, and here 5 lakh rupees of health coverage will be provided in public and private hospital, and it will be cashless here, right? Also, this new development is there that in this all the senior citizens that are above 70 years of age are covered in this, correct? Take a note of this, and it will be fully funded by the government of India, right? So take a note of this. Apart from this, students, if we talk about this objective, what is this? That we want a universal health coverage in the healthcare sector, correct? Moving on, right? So here you can see the scheme previously known as National Health Protection Scheme was renamed as Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, key component of the broader Ayushman Bharat initiative. So if this is Ayushman Bharat initiative, in this multiple other schemes are there, out of which one is your Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Next is, okay, not next, tell me recently which bank became the first wholly owned subsidiary authorized by RBI to collect GST payment? Which is that bank? It is your DBS bank. Next is NC, that is your National Center for Medium Range Weather Forecasting. This comes under Ministry of Earth Science, right? They have signed a memorandum of understanding with NSIL, that is New Space India Limited, that is the public sector undertaking, a PSU under the Department of Space, right? So this MOU was signed to establish 2 DBNet stations under Mission Mausam. What is this DBNet stations? DBNet stations are your direct broadcast network. Direct broadcast network, right? DB network, right? So what this DB network will be doing, and these 2 stations where they are located. So let's look at the location first. One is located in Delhi and second is located in Chennai, Tamil Nadu, correct? And they both have been established under Mission Mausam. Now, how they will be beneficial, right? They will be helping us to produce, collect data, right? Then based on this data, analysis will be done of the data, and it will be giving meaningful output. It will be projecting that when so and so weather phenomena can take into place, right? And in order to collect the data here, satellites such as your OceanSat, NOAA, METOP and other Earth observation satellites will be utilized here to collect the data, and this will play a very crucial role in numerical weather prediction for cyclone monitoring and for various climate research, right? It will support faster early warnings for the cyclones, floods, monsoons and extreme weather related events, right, students? If we talk about NSIL,
Who is the chairman and managing director of NSIL? Radhakrishnan Doiraj, headquartered in Bengaluru, Karnataka. Right? Then apart from this, Godrej Finance and Muthoot FinCorp. They have partnered together to boost the MSME funding, specifically in Tier 2 and Tier 3 cities. Moving on. Next is Goldman Sachs. They have added IIM Ahmedabad and IIML. What is this IIML? It is your IIM Lucknow, right? So IIM Ahmedabad and IIM Lucknow, EIC, that is Enterprise Incubation Center of IIM Lucknow, as a partner to Goldman Sachs 10,000 Women Initiative. I repeat, we know Goldman Sachs, this is an investment bank company. They added IIM Ahmedabad, Gujarat and IIM Lucknow Enterprise Incubation Center as the new academic partners of the Goldman Sachs 10,000 Women program. The aim here is basically to graduate 1,000 women in 2026 and 10,000 women by 2033. Correct? Take a note of this. And here only remember, this initiative will be focusing on that we should come, or we should help the women get educated, to get their degrees, right, and start earning for themselves, so they don't have to be dependent on anyone else, right? And with this, we will be seeing, as women will be coming into the job market, right? With this, India's GDP will also be enhanced, as they will be contributing in the economic growth of India, and we will be seeing that India's vision of becoming Viksit Bharat 2047 will now be more closer as compared to earlier, right, students? Next is Ministry of Education. They have launched Viksit Bharat Buildathon 2025, a build innovation among school students. See, this Buildathon, it is a kind of a hackathon only, where a problem statement is given to various teams, and these teams, they find solutions to this problem statement, right? And multiple teams are there, and the teams that give the best solution, they are selected and they are further mentored. They are even provided with funds so that they can carry out that particular project ahead. So Union Minister Dharmendra Pradhan has launched Viksit Bharat Buildathon, a nationwide innovation movement set to engage students across schools throughout India. And during this, he also launched a jingle and the logo of Viksit Bharat Buildathon 2025. Correct? And as I mentioned, what is the main theme? This will encourage the students to ideate and create and build products on 4 themes. Which are those 4 themes that will be focused here? Vocal for local, Atmanirbhar Bharat, Swadeshi, and Samriddhi. Right? On these, the focus will be. These are the 4 themes on which the Buildathon was held. Next is DFPD, that is your Department of Food and Public Distribution, that comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. They have signed a memorandum of understanding with the FCI, that is Food Corporation of India. This will strengthen the food grain management. See, we know India is an agriculture market, right? We produce a lot of harvest, right? And in order to store them, we need proper silos. We need proper storage units, right? We need proper warehouses. We need proper cold storages also to store certain kind of grains, right? So in order to strengthen this infrastructure, right, in order to make sure that our grains that we harvested should not go to waste, right, we need to have proper infrastructure into play, right? So this MOU will be focusing on that how can we minimize the losses here? How can we optimize the infrastructure? How can we improve the supply chain here with this? How can we ensure quality, right? So for all these things, this MOU has been signed. Next is banking and finance. Paytm Money, they have partnered with Jio BlackRock to launch India's first SAE fund. What is this SAE fund? SAE is your systematic active fund, right? And it is for the retail investors. It has been named as Jio BlackRock Flexi Cap Fund. So who are Paytm Money? They have partnered with this Jio BlackRock, and it is a joint venture between Jio Financial Service Limited and BlackRock, right? And we have seen that they have also launched multiple other funds also. And now with partnering with Paytm Money, they have launched this Jio BlackRock Flexi Cap Fund. Take a note of this. This will be a systematic active fund. So question will be asked this, name that systematic active equity fund that was launched by Jio BlackRock recently. So the name here is this, and they partnered for this with whom? It will be partnered with
Paytm money, right? Here investment strategy basically will be that AI driven BlackRock model will be used here by the name Aladdin, right? This is their platform that will be used here. This is an AI platform. With the help of this, they will be further investing the money, correct? And here for this, the expense ratio will be 0.5%. What is an expense ratio, students? Expense ratio is basically when you invest in mutual funds, and to manage that fund, a certain percentage of amount is charged on you every year, and for this it is 0.5%, correct? And no exit load. Exit load means when you want to sell a mutual fund, say specific time, you sell it within a year, right? Or you sell it within a specific time period that has been defined by that particular mutual fund, then you have to pay a certain exit load, but after that you won't have to pay any exit load. Next, here you can see, and this investment will be starting from 500 rupees, and subscription will be starting from 23rd of September to 7th of October. Next is Bank of India. They have partnered with Cash Voice to launch Trade Easy for investment MSME loans, right? I repeat, recently Bank of India, they have partnered with Cash Voice, that is a supply chain finance technology firm, and they have launched together Bank of India Trade Easy, that is a digital credit platform. So here credit will be provided on this platform. This will provide instant working capital loans to whom? To MSMEs, right? And this will be a game changer. How? Because in order to operate, sometimes these MSMEs, these small players, they run out of money, so they need immediate amount, right? They need amount instantly. So for this amount will be getting to them by within 30 minutes only. So these loans that will be granted through this particular platform, right? And here, or for this with particular initiative, that will be dispersed within 30 minutes. Next is OECD. OECD is your Organization for Economic Cooperation and Development. They have released their recent economic outlook, and they are talking about that the GDP of India is projected to grow by 6.7% in FY26, right? Earlier they were projecting that India will be growing by 6.3%, but now they have increased their forecast by 40 basis points, that is to 6.7%. This 40 basis point means 0.4 here, right? And if example 0, it is your 20 basis point means your 0.2%, right? For example, recently Fed, right, of USA, they have cut their interest rate by 25 basis points. So what does this mean? They reduce their interest by 0.25%. Your homework is to tell me now what is the interest rate that is there in US. Next is Cochin Shipyard. They have signed an MOU with HD Korea for long-term shipbuilding collaboration. I repeat, Cochin Shipyard, right? They have signed this MOU with a Korean company, that is your HD Korea, and this is for long-term shipbuilding collaboration. Students, if you are following me for a long time, you must have seen, and yesterday also we discussed that India is now focusing on the maritime economy. In the maritime economy, right? We need to grow in this sector. So for growing, we need ports, we need proper infrastructure in the play, right? We need our ports that they should be equipped with technology, right? Proper data harvesting is done so that we can fed it to AI, right? The logistics is proper, right? So for all these things, right? And also for shipbuilding, and we should have proper running functional ships that can do the job, right? So this maritime economy you will be seeing, and you have been seeing for a long time, and you will be seeing in future also, that India will be coming up with various projects, various MOUs, various contracts that will be signed here in this particular sector. And one such is here for the shipbuilding, that we are seeing this collaboration between Cochin Shipyard Limited and HD Korea, right? So in order to also manufacture these, also to build these ships, we will be needing a proper facility here. This planned facility, that will be your block fabrication facility, will be planned where? In Kochi, Kerala. And for this, investment of 3700 crore rupees will be required. Next is L&T partners with BEL for India's 5th generation fighter jet program. I repeat, L&T formed a strategic partnership with Bharat Electronics Limited to supply advanced medium craft aircraft. This is the 5th generation stealth fighter jet initiative for the Indian Air Force.
Correct? Take a note of this. Now this will be enhancing the Indian Air Force defense power, right? And with this, what we will be seeing that the prototype will be delivered by 28-29, and here it is expected that this will be inducted into the service by 2034 or 2035. Next, Akasa Air, they have partnered with Open Airlines to build a eco-flying platform. I repeat, Akasa Air, they have partnered with which organization? It is Open Airline, that is a global leader in fuel efficiency solutions for the aviation companies. So they have partnered with them to implement Skybreathe, that is a 360 eco-flying platform designed to optimize fuel management and reduce carbon emission, right? So this is an eco-flying platform, 360 eco-flying platform that has been designed because of which we will be seeing proper fuel management, and carbon dioxide emissions will be reducing, carbon monoxide emissions will be reducing, right? And this collaboration will enhance operational efficiency and promote sustainable practices within the airlines operation, right? And how this, because we know, see students, logistic is costly and it keeps increasing. The reason is inflation, right? Why? Because of inflation, the not petrol, the fuel price, it increases. And if the fuel price is increasing, we are seeing that the overall logistic cost will also increase, right? Hence, we need some solutions. And when we are burning these fuel that are your non-fossil fuels, so they will also create pollution. Hence, they are not that suitable. Till now, we were using it, but going ahead, when we want to make our economy clean, when we want to make sure we are focusing on the sustainable development goals and controlling the pollution and reducing the level of pollution, right? So, for that, we need to shift to some good and sustainable methods, right? Green methods. Next is awards and recognition. Recently, UK's Prime Minister Keir Starmer, as you can see him in the picture, conferred the Living Bridge Awards by IBG in London. I repeat, UK's Prime Minister Keir Starmer has been awarded with the Living Bridge Award, right? And this is in recognition of his role in strengthening the relationship between India and UK, right? Why? Because recently we saw a free trade agreement that has been signed between India and UK. With this, the trade between these two countries will be flourishing. Correct? Apart from this Living Bridge Award are presented annually by IBG to individuals and organizations, those who have made significant contribution towards strengthening the relationship between these two countries, that is India and UK. It can be in investment also, it can be in education sector, it can be in business, cultural, social ties, any sector. Moving on. Apart from this, students, if I ask you, tell me recently who has been appointed as the new BCCI president. Who has been appointed here as the new BCCI president? Mithun Manhas. Mithun Manhas, right? The new BCCI president. Then who has been appointed as the chairman of Advising Standards Council of India? That is ASCI. Sudhanshu Vats. Sudhanshu Vats. Next is science and technology. Agnikul Cosmos, they have launched India's first private large format 3D printing facility in Chennai, Tamil Nadu, right? So where has this been launched? Location is important, that is in Chennai, Tamil Nadu, right? And in Chennai, Tamil Nadu, where this can be asked next question, that is your IIT Madras, correct? In their research park, right? This has been the first private large format 3D printing facility being set up, right? This will change the manufacturing sector, right? Because it is a new innovation, correct? And it is a 3D printing facility. So this application, students, now being researched and studied that how we can also use this to build infrastructure on moon. If we will be going to Mars, then on Mars, right? How this can shape the building of these new infrastructure in later years of life. Even now we are seeing multiple facilities that are being using 3D printing, not just big infrastructure, but small products also, right? Say for example, an individual wants to go to Mars, right? It is a long journey. So they need to think of every object they will be requiring to carry with them for that long journey, 2 to 3 months long journey, right? It can be extended more, it can be shorter down, but still just have an idea about it, right? So
with the help of 3D printing, they do not have to think about all the products. They can manually print those products on the way to Mars, right? That is the technology and that is the benefit of 3D printing. Next is important days. International Day of Sign Language is observed on 23rd of September, and it is to promote and safeguard the linguistic identity and cultural diversity of the deaf people, right? In order to safeguard the linguistic identity and cultural diversity of the deaf people, right? And all the sign language users worldwide, this day is observed. Also, International Week of Deaf People, IWDP, is also observed from 22nd to 28th of September. There is a theme, students, here. No human rights without sign language rights is the theme for this particular day. Moving on, next is NSS Day. This is what? NSS is your National Service Scheme Day, right? It is observed every year on 24th of September across India to mark the establishment of NSS, that is a permanent youth program under the Ministry of Youth Affairs and Sports, right? And question can be asked, this day is administered by which ministry? Ministry of Youth Affairs and Sports, right? And this origin, it was proposed by Manoj General Jagannath Rao Bhonsle. Also, there is a motto for this NSS, that is your not me but you, right? And they have also a symbol of Rath Wheel of Konark Sangh Temple. Next is state news. Andhra Pradesh government and VPA, that is Visakhapatnam Port Authority, they have signed an MOU to establish a national mega shipbuilding cluster in Nellore, Andhra Pradesh. This MOU was signed during the national maritime event titled, that is Transforming India's Maritime Sector, in Bhavnagar, Gujarat. Right here, the investment will be of 29,253 crore rupees. Right, and here this is in line with India's vision of maritime sector. And again, see, mega shipbuilding cluster in Nellore, Andhra Pradesh. Right, again we are talking about ports. Again we are seeing our maritime economy will be flourishing, because now India will be seeing that, because for the last few years we were focusing on Make in India. We were developing a proper infrastructure for it, and now that infrastructure is almost ready. New infrastructure is being built, and with that we will be seeing that exports of India will be growing. Next is MDL, that is your Musgaon Dock Builders, Musgaon Dock Shipbuilders Limited. They have signed an MOU with Guidance Tamil Nadu for Greenfield Shipyard, right? So Musgaon Dock Shipbuilders Limited, that is a defense PSU that comes under the Ministry of Defense, right? And they have signed a memorandum of understanding where they have signed it with Guidance Tamil Nadu, right? And why is this MOU signed, right? This will be basically to explore Greenfield Shipyard in Tamil Nadu. Why shipyard? Because here the ships can repair, MRO, maintenance, repair and overall facility can be provided, right? They can be stored here, right? So with them they can be modified, or if there is change required or they want to build it, they can expand it, right? So again we are seeing maritime news. So students, see, again and again I am saying, more and more maritime news are coming into the picture now. More and more ports related, your shipbuilding related, because we need more ships to export the goods that will be built now. Next students, these were your important current affairs for the day. Next is your revision part. It will be quite beneficial for you all, so stay tuned with us till the end. Mark the correct statement regarding the recent report titled Management Effectiveness Evaluation unveiled by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav. If we look at the options, option A and B are right, C is wrong. C is saying that Ladakh secured the highest rank among the union territories with a score of 85.16. So is it correct? No, it is not Ladakh, it is Chandigarh that has secured the top position among the union territories with a score of 85.16%. Next, in June, 6-year-old Tejbir Singh set a world record by becoming the youngest to climb Mount Elbrus, the highest peak of the European continent, right? He set a new world record by surpassing the previous record that was held by Vaga Kushagra from Maharashtra, and he is just 6 years and 9 months, and he became the youngest ever in the world to climb the Mount Elbrus. Next, mention the organization that recently signed a memorandum of understanding with the Ministry of Youth Affairs and Sports to upgrade the My Bharat platform to My Bharat 2.0. Right? Which is that organization? It is Digital India Corporation. This upgrade, it will aim to enhance user experience,
better accessibility, better technological features that will support the government of India's vision to transform the India's demographic advantage into a development dividend. And this My Bharat platform, it was launched on 31st of October 2023. Next, mark the correct statement regarding the approvals of the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi of India on 1st of July. If we look at the options, option A is right, B is right, C is wrong. C is saying that the cabinet approved the Research Development and Innovation Scheme with 5 lakh crore rupees fund to strengthen India's research and innovation ecosystem. So, Union Cabinet has approved the Research Development and Innovation Scheme, that is RDI scheme, with a corpus of 1 lakh crore rupees, not 5 lakh crore rupees, right? So it is 1 lakh crore rupees, not 5 lakh crore rupees. Now option C is also right. Next, which of the following organizations released the report in July titled ZET Adoption in India and its Impact on Emission and Energy to promote faster adoption of zero emission trucking and support India's net zero goals? If we look at the option, which is that organization, it is Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. And this adoption of this zero emission trucking is basically a very good step in reducing the greenhouse gas emissions. Next, where was the first Association of Southeast Asian Nations India Cruise 2025 dialogue held, which was inaugurated by Union Minister Sarbandana Sonowal? So this event was held in Chennai, Tamil Nadu. This was a 2-day forum that brought together more than 30 delegates from all the 10 Asian countries such as Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, People Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, Timor-Leste, and many more. Right? Next is Union Minister for Jal Shakti Chandrakant Raghunath Patil inaugurated the Sea Flood. This is a web portal. This is a web-based flood forecasting system in Delhi, and this Sea Flood was jointly developed by whom? It was developed by Center for the Development of Advanced Computing and Central Water Commission. Next is, what is the new name of the National Institute of Public Cooperation and Child Development as officially renamed by the Ministry of Women, Child and Development? So what is the new name here? The new name here is Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. And this renaming, it honors Savitribai Phule, who was a 19th century educationist and a social reformer. Next, mark the correct statement regarding the recent report titled Chemical Industry Powering India's Participation in Global Value Chains by Niti Aayog. If we look at the options, we have to find the correct statement. Option A is right and B is right. C is wrong. C is India's chemical industry currently contributes around 10% to the country's GDP. This is wrong. So if we see here, the chemical industry in India, it contributes around 7% to the country's GDP, not 10%. Next, in July, where was India's first equine disease-free compartment officially recognized by World Organization for Animal Health established? Right? This equine, basically, it is a family of horses only, mares, right? And these equines, these are the mammals that belong to their family. And almost 60 extinct species has been found so far from the fossils, and we want to conserve them. So this India's first equine disease-free compartment was officially recognized by the World Organization for Animal Health, where it was in Meerut, UP. It was where in Meerut, UP. Next, which Indian ministry rejoined the Unicode Consortium as the supporting member, gaining voting rights alongside the United States of America? It is Ministry of Electronics and Information Technology. The supporting membership, it requires an annual fee of $20,000, that is approximately 17 lakh rupees. And it grants India a half vote in the Unicode Technical Committee, which meets both in the USA and online. Next, mark the correct statement regarding the initiatives that are launched during the International Conference on Sustainable and Responsible Mining through Best Mine Closure Practices that was held in Hyderabad, Telangana. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned. Then next, Union Minister for Cooperation Amit Shah has inaugurated multiple development projects that include Jairaj Sports and Convention Center, that is located where? This is located in Pune, Maharashtra. Right? Next is the Karnataka Cabinet has approved renaming of Bengaluru City University, after which former Prime Minister of India. So this university will be renamed after the former Prime Minister of India, that is Manmohan Singh, right? Dr. Manmohan Singh.
and Dr. Manmohan Singh served as the 13th Prime Minister of India for 2 terms, that is for 10 years, that is from 2004 to 2014. Next, as per the 19th Global Peace Index released by the Institute for Economics and Peace, which of the following countries is not ranked among the top 5 most peaceful countries? It is Denmark, right? If we talk about the index here, first thing, let's talk about India. India stands at 115th position, and it is Sydney, Australia based IEP, that is Institute for Economics and Peace, that is a global think tank. They have released the 19th Global Peace Index, and India was ranked here 115. Here Iceland, they have secured the first position, right? And then Ireland is on the second position. New Zealand. Next, students, is our homework section, and important questions, students. We have discussed these questions, so let's test your knowledge. First question: 5th edition of the World Tea Conference, it was held where? Second question: tell me recently what is the rank of India in the Global Innovation Index, and name that country that secured the first position also here. Third question: recently what is the fees of H1B visa for the new people, and it will be starting from which date? Then fourth question: tell me recently, if I ask you that who has been appointed as the next chairman of Coal India, or PESB recommended whom as the next chairman of Coal India Limited? And the fifth question that is important is, tell me who became the new BCCI president and who he will be succeeding. Name that individual also. So these are your homework questions, students. I want to see maximum participation from you all, and do hit the like button. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला हम स्टॉक सीरीज एंड वृद्धा मित्रा टूल किट की. देन हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ 7 न्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑफ वीवैक्स. नेक्स्ट थिंग बात करेंगे 7वीं एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया की, राइट. एंड आखिर में फिर इसके अलावा और चीज़ देखेंगे, जैसे डीबी नेट स्टेशन. 2 डीबी नेट स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं, कहाँ पे किए गए, क्यों किए गए, क्या इनसे बेनिफिट रहेगा, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद नेशनल अफेयर्स. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की, जो कि कहां पर हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे. ये थी आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई. यहीं पर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस दिए गए 19 एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स के अंडर, जहां पे 10 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 3 जूरी अवार्ड्स रहे. गोल्ड जिनको मिला वो 10 लाख रुपए तक का उनको कैश प्राइज भी मिला, एंड फॉर सिल्वर इट वाज 5 लाख रुपीज. ठीक है, मार्क करेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा को होस्ट किया गया था, राइट. तो इसको को होस्ट किया गया था DARPG along with MEITY along with Andhra Pradesh government, and also remember here other ministries such as your Ministry of Personal Public Grievances and Pension was also a part here. Correct? Then one more thing, remember during this, before moving on to the Gram Panchayats, remember before this there was a Visakhapatnam declaration that was signed here, right? And it is outlining the roadmap for India's digital transformation, right? That is your Visakhapatnam declaration. Then apart from this, there was a theme here that I want you all to remember. Theme being Viksit Bharat, Civil Service and Digital Transformation, right? And under these awards, some Gram Panchayats were also awarded. That was your Gold Award for Rohini Gram Panchayat for Dhule, Maharashtra. Silver Award for West Majlishpur Gram Panchayat for West Tripura, and Jury Award for Palsana Gram Panchayat. Correct? Moving on then, students, next is Prahlad Joshi ji and Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, as you can see him in the picture. They inaugurated AIIFA SteelX 2025 Mumbai, Maharashtra. See, the main aim of this was to promote green steel. For the few quarters back, since few quarters back, Government of India is promoting that we should focus on green steel, right? So even the manufacturers and the users, right, they are being incentivized to use green steel.
right? Because it creates less pollution, right? So here Prahlad Joshi ji and Devendra Fadnavis ji, they have launched and inaugurated this AIIA, that is your All India Induction Furnace Association Steelex, that is your Steel Mahakumbh, and as well as the 37th edition of the National Conference on Sustainable Steel was launched, where in Mumbai, Maharashtra. Theme, what was the theme for this event where they were launched? A Steel Mahakumbh, one industry, one destination, right? Moving on, students. Next is your Ministry of Social Justice and Empowerment. They have launched Vridha Mitra Toolkit and second edition of Shrinkla Hum Talk series. See, वृद्धा क्या होते हैं? वृद्धा होते हैं एडल्ट, बड़े लोग, राइट? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा वृद्धा मित्रा टूल किट को लॉन्च किया गया, जो कि सेकेंड एडिशन है एंड सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला हम टॉक सीरीज का। वृद्धा मित्रा टूल किट में है कि कैसे हम जो एल्डर्स हैं उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम उनकी जो वेलबींग है, जो उनकी हेल्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे ओवरऑल वेलबींग उनकी बेटर कर सकें, राइट? एंड ये विद्या मित्रा टूल किट आपकी स्कूल इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च की गई थी। स्कूल क्या है? सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशनल लिंक्स, एंड ये फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पर, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड ये स्कूल जो कि एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके ऊपर काम करती है। तो ये है विद्या मित्रा टूल किट। अगर बात करें सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला हम टॉक सीरीज की, तो ये एक टॉक सीरीज है, मतलब यहाँ पे लोग बैठ के बात करेंगे एंड दे विल बी डिस्कसिंग कि कैसे जो एल्डरली केयर है हम उसको और बेटर कर सकते हैं, कैसे लोग एल्डर्स को और हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो उसके लिए पॉलिसी मेकर्स साथ बैठते हैं, कई अदर इंडस्ट्री प्लेयर साथ बैठते हैं, ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी वेलबींग के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 7 न्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑफ वेवएक्स। अब देखो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या हैं? सबसे पहले वेवएक्स समझते हैं। वेवएक्स क्या है आपका? जो कि एक एनिमेशन, ऑडियो, विजुअल, आपका एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, इनके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? इस सेक्टर में बेसिकली। तो इन सेक्टर्स में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, टीम्स होंगी जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होंगी। तो ये नए 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, राइट? इंक्यूबेशन सेंटर होता है जहाँ पे ये स्टार्टअप्स को लोकेशन प्रोवाइड की जाती है, एक जगह प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे इनकी मेंटरशिप की जाती है, इनको ग्रो करने में हेल्प की जाती है, इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट? इनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो, चाहे कोई मेंटरशिप चाहिए हो किसी चीज़ की, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है इन दैट इंक्यूबेशन। तो ऐसे 7 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले गए हैं वेवएक्स सेक्टर से रिलेटेड, राइट? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कहां पर होंगे ये नए सेंटर्स? दिल्ली, जम्मू, ढेनकनाल, कोट्यम, अमरावती में, FTII पुणे में, SRFTI कोलकाता में, राइट? एंड यहाँ पे आप देखेंगे 15 सेलेक्टेड पर सेंटर इन द फर्स्ट बैच, मतलब 15 स्टार्टअप्स को, टीम्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इन द फर्स्ट बैच, राइट? एंड हर उसमें आपके 7 यहाँ पे देखने को मिलेंगे पर सेंटर। तो 7 सेंटर हैं इंटू 50, मतलब 105 यहां पर आपको टीम सेलेक्ट की गई। नेक्स्ट, इंडिया विटनेसिंग रेवोल्यूशन इन पब्लिक हेल्थ केयर, एंड हमने अभी 7वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव एक बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राइट? जिसके अंदर हम देखते हैं मल्टीपल अदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट? जिसके हम देखते हैं कि 5 लाख तक का यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है एक इंश्योरेंस क्लेम पर फैमिली को यहाँ पे अंडर दिस स्कीम, ठीक है? तो इस बार हमने उसकी 7वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर पूछी जाए कौन सी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है जिसने इसको लॉन्च किया, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर। अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली इंडिया की क्या रैंक रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो इंडिया 38 पोजीशन पे आता है, ठीक है? फिर अभी ट्रम्प के द्वारा, आन हम बोले यूएसए क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा इंडिया पर, या नॉट इंडिया विल बी रॉन्ग वर्ड, H1B यूजर्स पर 1 लाख $1 की यहां पे फीस लगा दी है। इससे क्या होगा? 21 सितंबर 2022 के बाद जो भी इंडिविजुअल H1B वीजा के लिए
अप्लाई करेगा, जो भी फॉरेन नेशनल यूएस में आने के लिए अप्लाई करेगा, राइट, तो उनको वन टाइम ये फीस पे करनी पड़ेगी उनकी कंपनी को, जिस कंपनी में वो जॉब करने आ रहे हैं, राइट। सो इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। इससे इंडियंस पे काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी, ये चीजें एक तो ये याद रखेंगे, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है NCMRFW। ये क्या है? ये है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इन्होंने एक MOU साइन किया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि स्टेब्लिश किया जा सके 2 DBNet स्टेशन अंडर मिशन मौसम। DBNet क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशंस, राइट। मिशन मौसम के अंडर ये स्टैब्लिश किए गए। कहां पे? एक होगा दिल्ली में, एक होगा चेन्नई तमिलनाडु में। इससे क्या होगा? जो वेदर का डाटा है वो हमें कई सारी सैटेलाइट से मिलता रहेगा एंड उसका प्रॉपर हम एनालिसिस कर सकेंगे तो उसका मीनिंगफुल आउटपुट हम यहाँ पे निकाल सकेंगे कि कैसे फर्दर में वेदर पैटर्न्स चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी सैटेलाइट्स, ओशन सेट, NOAA, METOPI एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, इनको यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है, राइट। इनका डाटा यहाँ पे कंपाइल करके बेटर मीनिंगफुल आउटपुट यहाँ पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोल्डमैन सैक्स ने ऐड किया IIM अहमदाबाद एंड IIM लखनऊ का EIC, राइट। IIM लखनऊ का EIC क्या है? यहाँ पर EIC है एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर। तो IIM अहमदाबाद एंड IIM लखनऊ का एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर एज पार्टनर टू गोल्डमैन सैक्स 10,000 वीमेन इनिशिएटिव। गोल्डमैन सैक्स क्या कहते हैं कि हम हर साल 1,000 वीमेन्स को एजुकेट करेंगे, राइट। हम हर साल 1,000 वीमेन्स को वीमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, राइट, मतलब 2026 तक। फिर ये कहते हैं कि ये डाटा ये हम बढ़ा के 10,000 वीमेन करना चाहते हैं। कब तक? 2033 तक। तो 10,000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय 2033 गोल्डमैन सैक्स के द्वारा इनके साथ पार्टनर किया गया ताकि इस इनिशिएटिव को पूरा किया जा सके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जरा बताओ अभी रिसेंटली वो कौन सा बैंक बना है जिनको RBI ने ऑथराइज किया है, जो कि पहला होली ओन्ड सब्सिडरी ऑथराइज्ड बैंक है, ताकि ये GST पेमेंट्स को कलेक्ट कर सके। तो वो कौन सा बैंक है? वो है DBS बैंक। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली BCCI के नए प्रेसिडेंट के तौर पे किन को इलेक्ट किया गया है? वो है मिथुन मैनहंस, ठीक है। फिर इसी के अलावा ASCI क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? सुधांशु वत्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए इनके चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 को। देखो बिल्डेथॉन क्या है? बेसिकली यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हैकेथॉन होता है। हैकेथॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड कई सारी टीम्स इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करती हैं एंड जिस टीम का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है उन टीम को सेलेक्ट किया जाता है एंड उनको फिर अदर एक इंक्यूबेशन की तरह प्रोवाइड कराया जाती है, कई सारी चीज़ें, फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, राइट, ताकि उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस सॉल्यूशन के ऊपर काम किया जा सके। तो यहीं पे ये बिल्डेथॉन हो रहा है, विकसित भारत बिल्डेथॉन। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था जो कि अपने आइडियाज़ को यहाँ पे फर्दर ला सकते हैं, उस आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे इवन वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो फर्दर वो कैरी भी कर सकते हैं यहाँ पर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं DFPD, जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन फूड ग्रेन मैनेजमेंट। देखो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर एक बोला जाता है क्योंकि बहुत एग्रीकल्चर है इंडिया में, राइट। कई सारे हम गुड्स प्रोडक्ट्स यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं, तो उन कई सारे ग्रेन्स भी हम हार्वेस्ट करते हैं। तो ग्रेन्स की प्रॉपर स्टोरेज के लिए, ताकि प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज चेन्स हो, वेयर हाउसेज हो, साइलोज हो, जहां पर हम इन ग्रेन्स को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें, ताकि एकदम खराब ना हो। उनको धीरे धीरे जब अगर मान लो फसल कम हो जाए अगले साल या फिर आगे आने वाले सालों में, तो उनको फर्दर यूज किया जा सके, ठीक है। तो इन साइलोज का, इन स्टोरेज यूनिट्स का बहुत जरूरत है, राइट। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर
सप्लाई चेन यहां पर होना चाहिए, करेक्ट। तो इसी रीजन के लिए यहां पे ये एमओयू साइन किया गया कि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया जा सके, सप्लाई चेन बेटर की जा सके, क्वालिटी के ऊपर काम किया जा सके, राइट, ये एमओयू साइन हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। पेटीएम मनी इन्होंने पार्टनर किया जियो ब्लैक रॉक के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके इंडिया का पहला एसएई फंड। एसएई फंड क्या है? सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है, राइट। एंड पेटीएम मनी के साथ जियो ब्लैक रॉक ने यहाँ पे लॉन्च किया। जियो ब्लैक रॉक खुद एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जियो एंड ब्लैक रॉक। इनके कई सारे और फंड भी आए हैं एंड दिस इज वन सच फंड। ये आपका बेसिकली अगर हम देखें तो 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड इसका नाम रहेगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.5% का। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो होता है कि जो फंड को मैनेज करने के लिए जो एनुअल फीस यहाँ पे डिडक्ट होती है, ये वो एक्सपेंस रेशियो है। नॉमिनल होता है 0.5% रहेगा एंड यहाँ पे जो एग्जिट लोड रहेगा वो भी ना के बराबर रहेगा, 0% रहेगा। नेक्स्ट, इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर अभी रिसेंटली बिहार की पहली वीमेन फाइट मास्टर कौन बनी? वो है मरियम फातिमा, ठीक है। वर्ल्ड बैम्बू डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 सितंबर को। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया कैसिन वॉइस के साथ ताकि ट्रेड इजी को लॉन्च किया जा सके फॉर इंस्टेंट एमएसएमई लोन्स। यहाँ पे 30 मिनट के अंदर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स मिल जाएगा एमएसएमईज को, राइट। इवन एमएसएमईज देखो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस करती है, इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशनल कैपिटल इंस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए, इंस्टेंट लोन लाने के लिए ये एमएसएमई के साथ 30 मिनट की फैसिलिटी लाई है। इसके साथ मिलकर कैसिन वॉइस के साथ कौन? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओईसीडी ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट टू 6.7% फॉर FY26। पहले ये 6.3 प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कि अगर हम देखें अब 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। 40 बेसिस पॉइंट होता है 0.4%, 20 बेसिस पॉइंट कितना होता है? 0.2%, राइट। तो सिमिलरली अगर देखें तो भी फेड के द्वारा 0.25% रिलीज किया गया। इंटरेस्ट रेट कम करेगा, मतलब 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कोचिन शिपयार्ड। इन्होंने एक एमओयू साइन किया एचडी कोरिया के साथ लॉन्ग टर्म शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन से रिलेटेड। देखो स्टूडेंट्स, हमने कल परसों भी डिस्कस की थी ये चीजें, कुछ टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडिया मैरीटाइम इकोनॉमी को ग्रो करने का काम कर रहा है, राइट। एंड इसके लिए हमें शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जो फ्यूल्स हम यूज करेंगे, राइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, करेक्ट। एंड जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कहाँ से आएगा? एमएसएमई से आएगा, जो अभी हमने देखा कि इंडिया इस पे भी बहुत काम कर रहा है। तो यहाँ से जो गुड्स बनेंगे हम उनको एक्सपोर्ट कर सकें, इसीलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पे हम कई सारे इनिशिएटिव देख रहे हैं शिप बिल्डिंग्स के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल फैसिलिटी के लिए एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन्होंने एमओयू साइन किया है साउथ कोरिया बेस्ड एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी के साथ फॉर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इन शिप बिल्डिंग, राइट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एक और चीज, यहां पे जो ये शिप बिल्डिंग होगी कहां पर होगी? ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी में होगी। ये कहां पर रहेगी? ये कोची में रहेगी एंड 3700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से होगी। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं एलएनटी ने पार्टनर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लाया जा सके। इससे इंडिया की कैपेसिटी, इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। एंड 2028-29 में इसका प्रोटोटाइप रेडी होगा एंड एक्सपेक्टेड है कि 2034-35 में ये यहाँ पे सर्विस में आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, अकासा एयर इन्होंने पार्टनर किया ओपन एयरलाइंस के साथ टू बिल्ड इको फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, राइट। अकासा एयर ये एक 360 इको फ्लाइंग प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे फ्यूल मैनेजमेंट बेटर होगी एंड कार्बन एमिशंस कम होते हुए दिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कम होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर आते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको लिविंग ब्रिज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है बाय आईबीजी इन लंदन। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है कि उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसको बेटर करते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, राइट। इवन अगर हम देखें अभी रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था इंडिया एंड यूके के बीच में, राइट, जिसके लिए इनको यहाँ पे काफी सराहना मिली एंड लिविंग ब्रिज के अवार्ड से इनको यहाँ पे भी सम्मानित किया गया।
मूविंग ऑन, फिर साइंस एंड टेक पर आते हैं स्टूडेंट्स। अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में भी कहाँ पर? IIT मद्रास रिसर्च पार्क में इन चेन्नई तमिलनाडु। देखो 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लो किसी अब अर्थ और मार्स पे हमारा आना जाना हो गया, राइट। अगर हम मार्स पे रॉकेट से जाते हैं और मान लो हम कोई इंपॉर्टेंट सामान भूल गए, फॉर एग्जांपल हम टूथब्रश भूल गए, तो ब्रश कैसे करेंगे, राइट। और हमारे पास 3D प्रिंटर है, तो नाउ विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर अभी हम काफ़ी माइन्यूट, जैसे ब्रशेस के जो आगे के स्पाइक्स होते हैं वो तो प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन मे बी इन फ्यूचर कर सके, राइट। इससे सिंपल एग्जांपल ले ले, कॉम्ब, कंघा हम भूल गए, अब मेरे को अपने बाल संवारने हैं, राइट, मेरे को अपने बाल ठीक करने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? 3D प्रिंटर विल बी कमिंग इनटू प्ले। मैं मार्स पे रहने लग गया हूं, पहुंच गया हूं वहां पे, तो अभी बिल्डिंग नहीं है, मुझे घर में रहने की आदत है, तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? मैं 3D प्रिंटर से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूं, राइट। सो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी प्रोडक्ट हम इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो डेफ पीपल हैं, राइट, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, उनको प्रिजर्व किया जा सके। एंड इसका ही एक वीक आता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 22 से लेकर 28 सितंबर तक। यहाँ पे एक थीम याद रखेंगे, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज, यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट NSS डे ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम 24 सितंबर को। NSS क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम डे 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इट इज टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSS। ये एक परमानेंट यूथ प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। एंड इसको प्रपोज किया गया था बाय मेजर जनरल जगन्नाथ राव भोंसले के द्वारा। एंड इसका एक मोटो भी याद रखेंगे, नॉट मी बट यू। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, इनके द्वारा MOU साइन हुआ ताकि एक नेशनल मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर को स्टैब्लिश किया जा सके नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, राइट। फिर से देखो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है, रीजन ताकि हम शिप्स को मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनकी मेंटेनेंस कर सकें, उनका रिपेयर की जरूरत हो वो कर सकें, राइट, उनको वहां पे स्टोर कर सकें, स्टोरेज मतलब वहां पे एक हैंगर की तरह काम कर सकें वो, राइट। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लोड करना, वो करना, कई सारी चीज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्होंने एक MOU साइन किया गाइडेंस तमिलनाडु के साथ ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने का। सी अगेन ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्या होगा? जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साथ में लेके आगे बढ़ेगा, राइट, टेक्नोलॉजी को साथ में लेके बढ़ेगा, जिससे हम देखेंगे कि जो कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, राइट। इससे हम देखेंगे कि ग्रीन शिपयार्ड होगा, ग्रीनफील्ड शिपयार्ड होगा, जो हमारा मैरीटाइम विजन है 2030 का, वो बेटर होता हुआ दिखेगा। इसके अंडर ही हम लैंड को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लोकल एरियाज ग्रो होते हुए दिखेंगे, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जो आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सब्सक्राइब किया टू 1301.25 करोड़ वर्थ ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये 3 साल के प्राइवेटली प्लेस्ड इन्वेस्टमेंट है बाय द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसका एम रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो फाइनेंसिंग है उसको बूस्ट मिल सके, ई मोबिलिटी सेक्टर को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जो कि पहला UAE बैंक बना जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ताकि सेटअप करने के लिए एट IBU जो कि है IFSC बैंकिंग यूनिट को, कहां पर होगी? जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। तो वो कौन सा पहला UAE का बैंक बना? वो है माशरैक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रेज किया $120 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 1028 करोड़ रुपीस इन अ सीरीज डी फंडिंग राउंड जो कि SC वेंचर्स के द्वारा लेड किया गया इन जून। ये 5th इंडियन स्टार्टअप बन गया टू रिसीव अ यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2025। कौन सी कंपनी है ये है जंबोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। एंड ये 5वां इंडियन स्टार्टअप बन गया जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जब एक कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन हम टच कर जाती है। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट बिकेम 3rd इंडियन स्टेट जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी। तो टॉप पे सबसे ज्यादा हमें रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, फिर यूपी में, एंड अब गुजरात में। 3rd इज गुजरात जिन्होंने ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को रजिस्टर किया।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? मेंशन, आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, राइट। एंड इन्होंने एक एमओयू साइन किया इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि इंडिया की पहली वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, हु वॉज बेस्टोड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 के एट द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई, इन रिकॉग्निशन ऑफ अर इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ में इन्होंने काफी काम किया है। ये है साइमा वाजिद, राइट। इनको सम्मानित किया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 से ड्यूरिंग द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 जो ऑर्गेनाइज कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जून 2025 में। तो ऑप्शन ए एंड सी सही है, ऑप्शन ए एंड बी गलत है, ऑप्शन ए एंड सी गलत है, ऑप्शन बी सही है। ए कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता अवार्ड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी, तो नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जीता गया। अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पर अवार्ड जीता, एंड प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में एचडीएफसी बैंक ने जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी जून 2025 में 6 साल पुराने नहीं, 6 साल के बच्चे तेजबीर सिंह, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडिविजुअल टू क्लाइम, क्या इन्होंने माउंट एल्ब्रस को क्लाइम किया। ये 6 साल के हैं एंड ये यंगेस्ट बन गए हैं टू अचीव दिस फीट। ये 6 साल एंड 9 महीने के हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव किया, जो कि हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू अपग्रेड माई भारत प्लेटफॉर्म टू माई भारत 2.0। तो ये है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये जो अपग्रेड है ये एनहांस करेगा यूजर एक्सपीरियंस को, असेसिबिलिटी को, टेक्निकल फीचर्स को, एंड सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को, ताकि जो इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है हम उसको डेवलपमेंट डिविडेंड की तरह यूज कर सके। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे थे कि जो कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को, आरडीआई स्कीम को, विद 5 लाख करोड़ रुपीस फंड जो स्ट्रेंथन करेगी इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को। तो बिल्कुल सही, बस अमाउंट गलत है, ये 1 लाख करोड़ होगी, ना कि 5 लाख करोड़। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट इन जुलाई जिसका टाइटल रहेगा ZET, जीरो एमिशन ट्रैकिंग अडॉप्शन को इन इंडिया में एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई, ये प्रमोट करेगी अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रैकिंग एंड सपोर्ट करेगी इंडिया के लार्जेस्ट जीरो गोल्स को। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 डायलॉग हेल्ड, जो कि इनॉग्रेट किया गया सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा, एंड एम रहेगा इंडिया में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये पहली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज टूरिज्म, या फिर हम बोले एशियन इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में हमें देखने को मिला। 2 दिन का ये फोरम था, 30 से भी ज्यादा डेलीगेट्स में हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम 10 एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, CR पाटिल, इन्होंने इनॉग्रेट किया सी फ्लड को, जो कि एक वेब बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम रहेगा। ये जो सी फ्लड है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है, किसके द्वारा इसको डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC एंड CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज ऑफिशियली रीनेम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रीनेमिंग करके क्या किया गया, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, राइट, उनको ऑनर करने के लिए ये रीनेमिंग की गई। अकॉर्डिंग टू द 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में से, तो वो है डेनमार्क। यहाँ पे मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में टॉप 5 में ये लिस्ट नहीं करते। पहले पे आ जाते हैं आइसलैंड, दूसरे पे आ जाते हैं आयरलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रिया एंड देन स्विट्जरलैंड। डेनमार्क टॉप 5 में नहीं आता। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो हम 115वें पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द SCO हेल्ड फ्रॉम
25 से 26 जून तक। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री, तो चाइना की लीडरशिप के अंडर ये हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे थीम रहेंगी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव, ये थीम भी मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं हम 7वें एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे। राइट स्टेटमेंट आपको यहाँ पिक करना है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इंडिया की 3rd पोजीशन आ जाती है ग्लोबली विद अ टोटल ऑफ 64 यूनिकॉर्न्स। USA टॉप पर है, चाइना 2nd एंड 3rd इंडिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 62nd सेशन की ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम 2025 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? ये जर्मनी में हमें देखने को मिली थी। ये 11 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट डेलीगेट्स एंड स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। सॉरी, ये तो हुई थी बॉन जर्मनी में, राइट। इसके बाद अगर हम देखें COP30, राइट, ये कहां पर होगी? ये ब्राजील में होगी नवंबर के महीने में। नेक्स्ट, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने विजिट किया USA को फ्रॉम 30th जून टू 2nd जुलाई टू पार्टिसिपेट इन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको पिक करना है, तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द क्रॉप जिसको टारगेट किया गया अंडर द क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग इनिशिएटिव, जो अभी लॉन्च किया गया था जुलाई में बाय घाना। इनका एम रहेगा इंडिया की अरिमा फार्म्स के साथ एंड CSIR केआम CRI कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर करके, ताकि इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वीट पर उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर हम डाटा देखें तो इंडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट $400 मिलियन के हम वीट को इंपोर्ट करते हैं। तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। एंड यहीं पे आप देखेंगे घाना के साथ मिलके हमने वीट प्राइड 999 इसको भी लॉन्च किया। यह एक वीट की वैरायटी है जो कि आपकी ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वैरायटी रहेगी एंड 6 डिस्टिंक्ट एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स में ये रहेगी इन घाना। नेक्स्ट, नेम द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, जो कि 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक देखने को मिली इन स्पेन। यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से देखें ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस एंड कीनिया ने यहाँ पे लॉन्च किया एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन, जिसका एम रहेगा इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन प्रीमियम एयर ट्रैवल। तो सिर्फ ये 2 कंट्रीज नहीं, इसके टोटल 7 कंट्रीज है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वो है आपकी फ्रांस, कीनिया, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन, सियरा लियोनी एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा। इनके द्वारा ये एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन को लॉन्च किया गया। अब 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियन, इन्होंने साइन किया एक लॉ सस्पेंडिंग कॉपरेशन किसके साथ? विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक वॉचडॉग है फॉर एटॉमिक एनर्जी। एंड ये क्यों किया गया? बिकॉज USA के द्वारा एंड इसराइल के द्वारा मिलकर ईरानियन की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे यहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी, जिसके बाद IAEA के साथ इन्होंने जो इनका कोलैबोरेशन था या जो भी कॉपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है ईरान ने। नेक्स्ट, RBI ने जून में इशू की फाइनल गाइडलाइंस फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स का अंडर डैश टू एनहेंस द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये किसके अंडर था? ये था आपका पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंदर। फिर आ जाते हैं उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया UPI क्रेडिट कार्ड एंड इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच को इन कोरामंगलम इन बेंगलुरु इन जून 2025। तो स्लाइस के द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा ये UPI क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया एंड इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट रिपोर्ट जो थी केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि जो इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री है ये करंटली कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10% टू द कंट्रीज GDP। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बल्कि 7% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल GDP। अब ऑप्शन C आपका सही है। अब 3 ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं इन जुलाई कहाँ पर इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को लॉन्च किया गया, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। तो ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका रहेगा मेरठ UP में। बेसिकली यहाँ पे जो आपके हॉर्सेस, आपके जो मेयर, इनकी जो स्पीशीज़ थी, राइट, जो इनकी फैमिली होती थी, फैमिली ट्री था, वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी फैमिली में, राइट, जो इनसे रिलेटेड थी, वो उनको बेसिकली वो लुप्त हो गई हैं, वो उनके फॉसिल देखने को मिले। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे ये डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट बनाया गया है, UP में है, मेरठ UP में। एंड इंडिया का पहला सच ये रहेगा जिसको WOAH का भी सर्टिफाइड किया गया, रिकॉग्निशन मिला है।
नेक्स्ट, किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंग साइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEITY। ये जो सपोर्टिंग मेंबरशिप है ये रिक्वायर करती है एन एनुअल फीस ऑफ $20,000 या फिर हम बोले 17 लाख रुपए, एंड ये ग्रांट करेगी इंडिया को एक हाफ वोट इन द यूनिकोड टेक्निकल कमेटी, जो मीट करेंगे बोथ USA एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू द बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस, जो हैदराबाद तेलंगाना में हमें देखने को मिला। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर इन, कहाँ पर हुआ ये था आपका पुणे, महाराष्ट्र में। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एन इक्वेस्टेरियन स्टैचू एंड द डेवलपमेंट ऑफ जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कहाँ पर होगा? पुणे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पब्लिक हेल्थ सिटी में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, द कर्नाटका कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है मनमोहन सिंह, राइट। ये इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 साल का इनका टर्म है, 10 साल तक इन्होंने सर्व किया था, मतलब 2 टर्म के लिए 10 साल के लिए इन्होंने सर्व किया था, 2004 से लेके 2014 तक। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1987 में, पद्मा विभूषण से 2001 में। Next students is our homework section and important questions students. We have discussed these questions, so let's test your knowledge. First question, 5th edition of the World Tea Conference, it was held where? Second question, tell me recently what is the rank of India in the Global Innovation Index and name that country that secured the first position also here. Third question, recently what is the fees of H1B visa for the new people and it will be starting from which date? Then fourth question, tell me recently, if I ask you that who has been appointed as the next chairman of Coal India, or PESB recommended whom as the next chairman of Coal India Limited? And the fifth question that is important is, tell me who became the new BCCI president and who he will be succeeding, name that individual also. So these are your homework questions students. I want to see maximum participation from you all and do hit the like button.